Hello guys, welcome back to the channel. And if you're new to this channel, then welcome to the channel. Make sure you subscribe before you leave. So हम लोग इस सीरीज में बात करने वाले हैं पाइथन की, पाइथन लैंग्वेज, not the snakes. And so let's start. So let's do the basics first. So Python is a high level language and Python is a interpreted language. So इसका मतलब क्या हुआ? High level language means it's very close to humans and very far away from the machine language. जब आप लोग पाइथन में काम करना स्टार्ट करोगे तो आप लोग देखोगे पाइथन इज वेरी मच सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज. लाइक आप लिटरली कोड पढ़ सकते हो पाइथन का. And interpreted means there are two types of languages, one compiled languages and second interpreted languages. So compiled languages में क्या होता है, आप जब भी कोड लिखते हो तो वो कोड पहले कंपाइल होता है, उसके बाद में वो कोड एग्जीक्यूट होता है. बट इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस में कोड एग्जीक्यूट और कोड कंपाइल और एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली होता है. सो बेसिकली कोड आपका लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है. सो ये बेसिक डिफरेंस होता है दोनों लैंग्वेजेस के बीच में. सो कंपाइल लैंग्वेजेस के अगर आप एग्जांपल देखोगे तो सी प्लस प्लस एंड सी शार्प. एंड interpreted languages के examples PHP, Perl and Python. Python was created by Guido van Rossum in 1991 and like that's it for the creator. Now Python बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं हम लोग. like Python की possibilities and like usage limitless है. So Python से आप लोग गेम्स बना सकते हो. You can write scripts. Basically hackers यूज़ करते हैं Python automate करने के लिए चीज़ें. Then Python can also be used in web development. So web development में हमारे पास जो frameworks हैं वो है Flask और Django. Then Python is like obviously used in machine learning. machine learning बहुत trending है इस time पे. So Python is used in machine learning. हमारे पास में packages होते हैं, so scikit, numpy and other stuff. Then Python is also used in data science. So Python की community बहुत ज़्यादा बड़ी है and Python is one of the most popular languages. Okay, now easiest language to learn. So I'll tell you a quick fact maybe or like a quick stat. So like इंडिया में जब आप लोग प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में एंटर करते हो, like it can be in your school 11th या 12th में और it can be in your college first या second year. So normally हम लोग जो पहले लैंग्वेज चूज़ करते हैं वो हम लोग C से स्टार्ट करते हैं and like कुछ लोग मे बी जावा से स्टार्ट करते हैं. बट इफ़ यू टॉक अबाउट फॉरेन कंट्रीज मे बी USA एंड अदर कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज, तो वहाँ पे लोग पाइथन पहले प्रेफर करते हैं बिकॉज पाइथन इज ऑल लाइक इज़ वेरी मच सिमिलर टू इंग्लिश एंड लाइक जो बच्चे होते हैं बहुत जल्दी ग्रास्प करते हैं पाइथन के ऊपर. तो दैट इज़ वाई दे यूज़ पाइथन. पाइथन इज़ वेरी इजी टू लर्न. नाउ इफ़ आई शो यू द stats according to Stack Overflow, let's see Stack Overflow statistics. And if we check the 2019 survey, Python is the second most loved language. So we'll go to technologies and if we come here, so most loved, so Python is on second. And if we go to wanted technologies, then Python is on first. So like आप लोग इस stats idea लगा सकते हो कि Python is very much popular and for that reason we'll be learning Python. Now Python install करने के लिए you have to go to python.org. okay, then you will go to downloads and downloads में आपके पास में यहाँ पे ऑप्शन होगा Python 3.8.1. if you click this button it will start downloading. okay, I'll save it here and we'll meet once my package is installed. so ये डाउनलोड हो गया, तो इसको आप पैकेज को क्लिक कीजिए एंड ये इंस्टॉल खुल जाएगा. देन मेक श्योर यू टिक दिस ऑप्शन एड पाइथन 3.82 पाथ. तो इससे क्या होगा कि जो पाइथन है वो आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में ऐड हो जाएगी एंड आप पाइथन कहीं से भी एक्सेस कर पाएंगे. सो चेक दिस एंड देन क्लिक ऑन इंस्टॉल एंड उसके बाद में आपकी पाइथन इंस्टॉल हो जाएगी. सो लाइक इट्स वेरी इजी.
ओके, सो पाइथन इंस्टॉल हो चुकी है एंड विल जस्ट क्लोज दिस नाउ। अगर आपको चेक करना हो कि पाइथन इंस्टॉल हुई है कि नहीं, सो यू कैन ओपन योर CMD एंड आप CMD में टाइप कीजिए पाइथन। सो अगर आपके पास में 3 एरोज आते हैं, सो ये 3 एरोज बेसिकली आपके पाइथन, आई थिंक दिस इज इंटरप्रेटर, तो ये ओपन हो गया है। सो मतलब आपके यहाँ पे पाइथन इंस्टॉल्ड है, यहाँ पे पाइथन का वर्जन भी मेंशन्ड है 3.8.1। सो जस्ट टू चेक एवरीथिंग वर्क्स, आप 2+3 लिखिए तो ये 5 आउटपुट देता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस फर्स्ट ट्यूटोरियल, एंड सेकेंड वीडियो से हम लोग एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट करेंगे एंड विल डू गुड थिंग्स। बाय, टेक केयर।